So the first question, what was the first question? आपके पास questions नहीं है? Name 3 font style tags. What are the 3 font style tags? B tag, I tag, U tag. So the 3 font style tags are bold, italic, underline. The 3 font style tags are B, I, and U. That is bold, italic, and underline. Right? Second question, write any 3 values that can be given to the type attribute of OL tag. 3 values of the OL tag under the type attributes. Anji, what can be the values inside the type attribute? Uppercase letter. Uppercase So letters, lowercase lowercase numbers. letters, uppercase, Roman. Capital A, small a, 1, Roman small I, and capital Roman I. तो आपको क्वेश्चन में 3 वैल्यूज पूछी हैं. राइट एनी 3 वैल्यूज, बट इन द टाइप एट्रीब्यूट ऑफ OL tag देयर कैन बी 5 वैल्यूज. राइट? क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट 3 एट्रीब्यूट्स ऑफ HR tag. Color, align, tag. size, width. So HR tag again is having 5 attributes. Number 1 is align, color. You can set the thickness of the line using the size attribute. Size से क्या set होता है? Thickness. Thickness of the line. Align, when you want line to appear in center, left or right, so you can use align attribute for that. Color will set the color of the line. Then उसके बाद और कौन सा होता है? No shade. That is used to depict in the 2-dimensional view. अगर आपको 2D व्यू चाहिए लाइन का, this attribute will be no shade, right? और कौन सा attribute होता है? Width. Width will set the length of a line. कितनी लंबी आपको कितनी long line बनानी है, that you can set using width attribute. Size से thickness of the line, color of the line, alignment of the line, and to depict it in a 2-dimensional view. Next question. 3 attributes of marquee tag. Behavior, weight, height. Weight, And height. marquee tag. कौन से attributes होते हैं marquee tag के? Behavior, weight, height. You cannot set background color. So height you can set background color of the marquee, then a behavior. Clear? You can set a behavior. What are the values of behavior attribute? Alternates, Slide. scroll and slide. Alternate, scroll, slide. The values of the behavior attribute can be, it's not background color, it's BG color. Alternate, scroll and slide. Any doubt? The question is clear? Yes, बच्चे? जो नो शेड वाला एट्रीब्यूट है उसमें कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है? नो शेड की कोई वैल्यू ही नहीं होती. सिंपली यू हैव टू राइट इट लाइक दिस. HR no shade. No shade attribute is not having any value. Okay. Okay. Name any 4 container tags. Next question. Any 4 container tags. HTML font. Body, title, B tag, center tag. HTML, body, title, head, center, bold, italic, underline, center,
OL, UL, font, table, वो उसके P अंदर ही tag. आ गए सारे. और SUB, SUP, क्यों है ना ये टैग, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट, चॉक्स. So all these are the container tags. Okay, what are container tags? Which have both as well as opening as well as closing tag. So container tags are the tags which are having both opening as well as closing tag. Clear? The meaning of container tag and the examples. All these tags are under the container tags, which are having both opening as well as closing tag. Clear? Next question. Name the tag used for the following: to display the text or image in the center of web page. Center tag. हाँ जी, हाँ हाँ. बट आपको ये आ सकता है कि आपको टैग्स दी होंगे, यू हैव टू टेल कि विच वन इज द कंटेनर और विच वन इज एम्प्टी. इट कैन बी देयर कि आइडेंटिफाई में क्वेश्चन आपको पूछा जाए. We have already done in the class and we have done the revision of HTML also. Today we are going to start with VB part. लिखो empty text. आपने क्लासेस नहीं ना अटेंड करी हुई है. empty tag, HR, DR, IMG, link. Write the examples of empty tags. और कौन सा हम करते हैं? LI को तो चलो हम कंटेनर भी ट्रीट कर लेते हैं और इट कैन बी ट्रीटेड एज दी एम्प्टी आल्सो. तो वी आर नॉट स्पेसिफाइंग इन पर्टिकुलर कैटेगरी. ये चार आपके पर्टिकुलरली एम्प्टी टैग्स में ही कंसीडर होंगे. ओके, वो कंटेनर भी ट्रीट हो जाते हैं, एम्प्टी भी. बोथ में आएगा ही नहीं सर. जिसमें जा तो अगर इनके साथ था तो राइट इट बोथ. ठीक है, दोनों तरह ट्रीट हो जाएगा. ये चार पर्टिकुलरली टैग्स आपके एम्प्टी में ही रहेंगे. टू डिस्प्ले द टेक्स्ट और इमेज इन द सेंटर ऑफ वेब पेज, व्हिच टैग इज टू बी यूज्ड? Center tag. tag. So for displaying the text or image in the center of the web page, the tag is center tag. To display, लिख लो question. To display the text or image in the center of the web page, the tag is center tag. To break line and display the text in the next line, BR tag. BR tag. tag. This is to break the text, display the text. Next, to insert an image on the web page. To insert an image, the tag is IMG tag. I am just. to insert image, the tag is IMG tag. Next question, to create hyperlinks. A tag. E tag. To create hyperlinks, the tag is A tag. A tag. कर दूं रेस? Next question, write down the full forms for the following tag. Number 1, UL. Unordered list. Unordered list. Unordered list. Second tag is A tag. Anchor tag. Anchor. tag. Anchor. TH. Table Header. Table head or table header, both are correct. Last one is the HR. Horizontal rule. Horizontal rule.
horizontal rule. Next question, the tags are given and the attributes are given. You have to match the particular tag with their attribute. So number 1, body, BG color. PG color. P tag, Align. IMG and font. और इस साइड पे आपको गिवन है अलाइन स्टार्ट, SRC, space, BG color, href. हाँ जी. So you have to match a particular tag with its attributes. The body belongs to BG color. PG color. color, P, Align. OL, Start. A, Href. href, IMG, SRC, Source. Source. space. Face. Clear? Align belongs to the P tag, start belongs to OL, SRC belongs to image, space belongs to font, BG color belongs to body, href belongs to A tag. Next question. Next, the coding section was there, 5 questions. So first part, to display the text with best wishes, to display the text with best wishes in the center, bold and blue color. Center, bold, blue color. हाँ जी, tell me the code. Center tag. सबसे पहले आपको क्या Bold center tag. लगाना है? Then B tag. bold के लिए B tag, color blue Font tag. तो कौन सा टैग लगेगा? अगर color set Font tag. नहीं आती ना कोडिंग, हमने चैप्टर रिवाइज कर लिया हुआ है बच्चे, कि पूरा लास्ट वीक सिर्फ कोडिंग की रिवीजन हुई है क्लास में. फॉन्ट कलर इक्वल टू ब्लू, और आपको टेक्स्ट क्या गिवन है? With best wishes. Now the order of closing the tag will be reverse. तो सबसे पहले font tag close, B tag close, center tag close. Next question, कर लिया आपने नोट डाउन ये? To draw horizontal line of yellow color, horizontal line of yellow color, 60% white, left side. हाँ जी बताओ. HR color equal to yellow, align left, वेट था आएगा.
श्योर? हाँ जी, क्या आएगा 60% वाइड? विच एट्रीब्यूट? Size. यहाँ पे आपको लेंथ नहीं बोला, वाइड बोल रहा है। वाइड मतलब कितनी उसकी थिकनेस है, तो दैट विल बी लेकिन परसेंट में गिवन है तो साइज परसेंट में हो सकता है। कैन द परसेंटेज वैल्यू बी इन द साइज? तो फिर क्या आएगा सोचो? इट्स विड्थ। क्लियर है? परसेंटेज वैल्यू जो पिक्सल वैल्यू किसमें आती है? इन अ विड्थ, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, third part, to display listen carefully as heading level 3, heading 3 on right side. Listen carefully. हाँ जी बताओ, हेडिंग कौन सा बोला गया है? 3. हेडिंग 3 means H3. H. Now we have to set it on the right side. The attribute Align. align is Align. clear? और क्या डिस्प्ले करना है आपको? Listen carefully. And close the H3 tag. Okay? Clear है question? To insert image sunset.jpg, right side border 7. So tell me the command. Image source is equal to sunset.jpg. img src equal to sunset.jpg. Align is equal to right. Align equal to right. Border equal to 7. Border की वैल्यू कितनी है? 7. Clear? Image source sunset.jpg, right side given है. For right side the align attribute is to be used. Border की वैल्यू 7 given है and we are having the attribute that is border. Last coding question, to start an ordered list with letter D. To start ordered list with letter D. OL OL type is equals to small a. start 4, क्योंकि D की वैल्यू 4 आ रही है ABCD, लेकिन ये स्मॉल में गिवन है, वो तो आएगा ही नहीं इससे. So we have to set a Type type equal to small a. equal to small a, क्योंकि by default value 1 2 3 आती है, so that's why we have to specify the type attribute here. Okay, and the value for the start D की वैल्यू 4 आ रही है and the type is small a. Yes, any doubt in the test? Any question? Yes बच्चे, any question? ना क्लियर हुआ हो आपको कोई कोडिंग है? हाँ जी कशिश. मैम आई हैव डाउट इन द चैप्टर 10. मैम वहाँ पे जब हमने क्वेश्चन आंसर्स किए थे तब हमें क्वेश्चन था विच एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी टैग्स आर यूज्ड टू सेट द मार्जिन्स इन वेब पेज. मैम तब आपने लिखवाया था टॉप मार्जिन एंड लेफ्ट मार्जिन, बट मैम यस मैम, बट मैम 120 पेज पे ऊपर टिप में दिया हुआ है कि राइट और बॉटम मार्जिन भी हो सकता है. But it's not working.
जो उसकी एक्चुअल वैल्यूज है ये HTML5 में ऐड ऑन हुए हैं, लेकिन उसके प्रायर जितने भी वर्जन हैं उसमें टॉप मार्जिन एंड लेफ्ट मार्जिन आर दी वैल्यू. ओके, Okay, ma'am. Yes. so that is with respect to the version of the HTML. Any other doubt? So let's start with the revision part of chapter number 8 now, that is Visual Basic. Yes, VB stands for Visual Basic. Visual Basic. What is a VB? What do you understand by the term VB? It is a programming language. It is a programming language, correct? Event-driven application. So first thing about the VB, it is a programming language. And who developed VB? Microsoft in May It was developed by 1990. Microsoft in the year 1991. 1991. So VB is a programming language which was developed by Microsoft in the year 1991. Visual Basic was based on which language? Based on which language? Based on Basic language. Visual Basic was based on Basic language. Beginners all purpose symbolic instruction code. Basic की full form क्या है? Beginners all purpose symbolic instruction code. So VB is a programming language which was developed by Microsoft in the 1991. It was based on basic language, that is beginners all purpose symbolic instruction code. Now VB is a GUI language. It is a GUI language. The full form of GUI is Graphical user interface. graphical user interface. Why we are calling it as graphical user interface? हम इसको graphical user interface क्यों कह रहे हैं? Because in VB we can add graphics. Because in the VB you are going to interact with the form. आप फॉर्म और कंट्रोल के साथ इंटरेक्ट करते हैं ना. यूजर क्या करता है? फॉर्म बनाता है, फॉर्म के ऊपर हम कंट्रोल्स रखते हैं, कंट्रोल्स के ऊपर क्लिक करके हम कोडिंग ऐड करते हैं. So how we are interacting with the application with the help of the graphical controls, with the help of the graphic interface. और उसमें graphic interface कौन है? आपका फॉर्म. फॉर्म क्या है? एक विजुअलाइजेशन है, एक इमेज है, एक ग्राफिक्स है जिसके साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं. इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं? बाय क्लिकिंग ऑन अ बटन, बाय एंटरिंग द टेक्स्ट इन द टेक्स्ट बॉक्स, बाय प्लेसिंग द लेबल. तो ये सारे कंट्रोल्स आप प्लेस करते हैं ऑन अ फॉर्म. So form is a graphical interface with the help of which user can able to interact with the controls. So Visual Basic creates event driven application. ये सारी इंट्रोडक्शन में लिखने हैं आपने. विजुअल बेसिक और क्या कहते हैं? इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग. What is event driven programming? The statement get executed when a corresponding event occurs. Right. So the statements in the Visual Basic will execute only when a particular event will occur. The events can be you are clicking on a button. Event occur हुआ, आपने क्लिक किया तो क्या हुआ? डबल क्लिक करा तो क्या हुआ? ड्रैग करा तो क्या हुआ? क्लियर?
So these are the event driven programming language, because the actions will be generated, the actions will be executed as soon as some of the event will occur. So it is called event driven programming language. So it is a part of the Microsoft Visual Basic 2010. Underline करो पेज 84 पे. Visual Basic 2010 Express किसका पार्ट है? It is a part of Microsoft Visual Studio. Microsoft Visual Studio 2010. VB 2010 Express. It is a part of Microsoft Visual Studio 2010. VB is a freeware software. It is a freeware. अगर आपसे फीचर्स पूछ लिए जाए VB के, तो जितने मैंने एरो डाल के लिखे ये सारे इसके फीचर्स हैं. All these are the features of VB language. It is a freeware software. It is a GUI based. It is a event driven. It is a programming language. Okay. So it is a freeware which will consume less memory, consume less space. And event driven में आपके पास कौन कौन से actions आ जाते हैं, such as pressing a key, clicking a mouse, double clicking, selecting a checkbox. All these are the action. Now there are three modes of the Visual Basic. Three modes of the Visual Basic program. What are those? Design mode, break mode, and run mode. The modes of VB program. There are three modes of the VB program: design mode, run mode, Break mode. break mode. There are total three modes of the VB program. कौन-कौन से modes हैं? Design mode, run mode, and break mode. Design mode is the mode where the user can create the objects and write the logical statements. Run mode, in which the programs are executed by the user. Break mode, when the program will break down and it will not give you the desired output. तो डिजाइन में आप इंटरफेस को डिजाइन करते हैं, अपने फॉर्म को डिजाइन करते हैं with the help of certain controls. Break mode तब हम लगाते हैं जब हमारे पास we are not getting the desired output, so we have to break our program in between. Run mode, where the user is actually implementing or running that program, that is called the run mode. The three modes of the VB program are run, design, and break. Clear? So revise the definitions once again of design, run, and break. तीनों का meaning you have to learn. Next, name the panes in the Visual Basic Express window. What are the panes available? The number one is recent pane, new project, open project, latest new section, and the getting started pane. Getting started pane. To create the first VB application, where we have to click? To create first VB application, the option new project is to be clicked. For creating the new VB application, the option new project is to be clicked, and under the new project, we have to select Windows Form Application. Windows Form Application. Clear? Under the new project, the option Windows Form Application is to be select, where you have to specify the name of a VB program. इसके अंदर जाके आप अपना VB के program का name specify करेंगे. Now next, what are the components of Visual Basic interface? What are the components? Title bar, menu bar, toolbar, form window, properties window, Properties window. solution explorer, toolbox, code window. Yes. So the components of the Visual Basic Impress window, number one is title bar.
टाइटल बार क्या डिस्प्ले करेगा? टाइटल ऑफ द एप्लीकेशन. आफ्टर दैट देयर विल बी अ मेन्यू बार. Menu bar will display the list of menus which are having a list of options that are required to perform a particular action. Then is the toolbox tab which is having all the tools in it. Main window. Under the main window there will be a form window where you are going to design a form. Then is the solution explorer. Solution explorer में all the list of recent projects and the existing projects will be available in the solution explorer. Properties window, the list of properties for a particular selected tool will display in the properties window. So the components are clear. Once again, you have to learn the one line definition and meaning for each of the component from page number 86 and 87. Title bar, it is present at the top of the window, which will display the name of the currently selected project. Menu bar में सारे menus आ जाएंगे. Tool bar will be giving you the variety of a list of tools with the help of which you can able to perform your VB script. Form window on which you are going to place the controls through which the user will interact. Properties window, properties of the selected tool. Solution explorer that will display the list of form as well as the आपके जितने भी projects आपने बनाए होंगे, right? Code window is the window that is used for writing the codings, जहाँ पे आप codings लिखते हैं, right? So rest we will cover tomorrow. So revise up to page number 87. So today we have done till page number 87. So give a revision of the same, okay? And next we will continue with tomorrow.